Hello everyone, welcome to a new video. So in this video we will discuss about the history of museums in India, that is from the colonial time to the post independence era. So अगर आपने हमारा previous video नहीं देखा, that was about the definition and the meaning of the museum and museology, तो उस वीडियो को पहले देख लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा and then move towards this video. So this is our second lecture. So इसमें हम डिस्कस करेंगे about the history and evolution of museums in India फ्रॉम कॉलोनियल टाइम्स टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. सो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए. वीडियो को पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना. सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन एंड अर्ली रेफरेंसेस. सो जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ बाय विलियम जोन्स इन 1784, सो दिस सोसाइटी प्लेज अ मेजर रोल. इस सोसाइटी के इस्टेब्लिशमेंट के बाद ही इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द म्यूजियम मूवमेंट्स इन इंडिया. सो ये जो सोसाइटी थी एक मेजर रोल प्ले की इन द स्टडी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज इंक्लूडिंग इट्स हिस्ट्री, आर्ट एंड नेचुरल हिस्ट्री. सो इट ऑल्सो लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेवरल म्यूजियम्स, जिसमें कि इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता भी आता है, विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ आवर कंट्री. सो अगर आप एनेसेंट इंडियन टेक्स्ट भी देखोगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं एनेसेंट म्यूजियम्स और कलेक्शंस का आपको कहीं ना कहीं मेंशन्ड मिलेगा. लाइक इट टॉक्स अबाउट द आर्ट गैलरीज, जिसको कि चित्रशाला नाम से मेंशन किया गया है. लाइब्रेरीज दैट इज़ नोन एज द सरस्वती भंडार एंड द कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स, जिसको कि तोसी खानास बोला गया है. ये सारी गैलरीज ऐसी प्लेसेस हुआ करती थी जहाँ पे किंग और नॉबल्स बैठ के इनको एंजॉय किया करते थे और रिलैक्स किया करते थे. इवन दो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, बट दे वेयर नॉट लाइक द मॉडर्न म्यूजियम्स जो कि अभी के टाइम पे अवेलेबल है. उससे ये सारे म्यूजियम्स काफ़ी डिफरेंट हुआ करते थे. दो दे होल्ड अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस बिकॉज दे हेल्प इन प्रिजर्विंग द रिच कल्चरल हेरिटेज. अर्ली म्यूजियम कॉम्पोनेंट. सो इन एंशिएंट इंडिया मेन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स सर्व्ड एज द अर्ली वर्जन ऑफ म्यूजियम्स. सो एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और साइट्स थे जो कि जिनको माना जाता है द अर्ली वर्जन ऑफ द म्यूजियम्स, जिसका एग्जाम्पल दे रखा है अशोकास इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स एंड पिलर्स एंड द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, जो कि ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और स्कल्पचर से भरे पड़े हैं और वो हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर. बट जैसे कि आज के टाइम पे म्यूजियम्स जो है वो पब्लिक के लिए ओपन रहता है फॉर द पर्पस ऑफ एन्जॉयमेंट, स्टडी, एजुकेशन. बट उस टाइम पे ये जो थे वो ओपन नहीं थे पब्लिक के लिए. दो दे यूज टू गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट दे वेयर नॉट ओपन टू द पब्लिक लाइक टुडेज म्यूजियम. Development of museum movement. So the development of museum in India happened in several phases, and also there was several factors that affected the development of museums in India. First was the British encouragement. So British officials in India who had seen museums in their country supported the idea of starting museums in India. Second factor is the support from Indian princes. So जो royal families थी India में, they also helped in establishing museums. Philanthropic societies basically include the groups of learned and generous people. They also donated their skills, knowledge and their collection to start museums. Fourth factor is archaeological surveys of India. So this organization also helped in creating museums at different historical sites. And fifth factor is key figures. So the important peoples like Lord Curzon, John Marshall of that time, so they played a big role in the museum movement. The history of museums in India and its evolution is divided into 5 major phases. So first is the formative phase, that was between 1796 to 1858. So this phase started with the Asiatic Society of Bengal. So basically that was founded by the William Jones. So India's first museum was set up in Calcutta in 1880. That was the इंडियन म्यूज़ियम इन कोलकाता. सो वो सेटअप हुआ 1884 में और उसके बाद मद्रास में और बॉम्बे में भी म्यूज़ियम सेटअप हुए. द सेकेंड फेज इज़ ऑफ द विक्टोरिया एरा 1858 टू 1899. सो आफ्टर द 1857 अपराइजिंग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे took control from the East India Company and they focused on preserving India's cultural heritage. Archaeological Survey of India set up किया गया in 1861, leading to the creation of many provincial museums. Third is the era of Lord Curzon and John Marshall, that was between 1899 to 1928. Lord Curzon and John Marshall did a lot to preserve art and archaeological sites. Many site museums were established during this time. Fourth one is the pre-independence era, that was between 1928 to 1947. So more museums were created such as the Central Asian
Antiquities Museum in 1929, and museums were also set up by the city councils and other organizations. The fifth one was the post-independence era, 1947 to present. After India gained independence, the museum movement continued to grow, helping preserve the country's rich cultural heritage. So this was all about the lecture. Hope you like it, and if you like it, do like, share and subscribe to my channel.